everyone. So today we would be continuing our basic series, and today's topic of discussion is business cycle, right? So let's continue the discussion. See, when we are studying, or rather when we would be studying the further chapters, we would be using these terms, right? कि business cycle है, the reason for so and so is because of the market fluctuations and the expansion and the contraction. So ये है क्या? What this word is all about? और ये क्या हमें बताता है, right? Why do we use these terms? Okay. So on the y-axis, we have the GDP. Now you would say, what is GDP? If you are not aware, it's the gross domestic product. तो y-axis पे हमने GDP रखा है और x-axis में we have the time, right? जो हम you say how the movement or would be, how the economic activity would be for a period of time. ठीक है, तो बिजनेस साइकिल के लिए पहले थोड़ा सा जीडीपी का आइडिया ले लो कि जीडीपी क्या होता है. जीडीपी इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ व्हाट? ऑफ अ कंट्री, ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, कि और सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, ये एक कंट्री की रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है साइज ऑफ द इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ का आपको पता चलता है. ठीक है, हाउ द इकोनॉमी इज प्रोग्रेसिव, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल हैव मस्ट हर्ड दिस वर्ड, और दैट वी आर टारगेटिंग अ $5 trillion इकोनॉमी, राइट? सो व्हाट इज दिस 5 trillion? व्हाट इज दिस 5 trillion? दिस इज नथिंग बट द जीडीपी, राइट? सो इनिशियली, as our Honorable Prime Minister has remarked in 2018, that by 24-25 इस साल तक we would be achieving this mark, right? But now the target year for achieving this figure is 2027-20. ठीक है, तो हम जो सोच रहे हैं that by the year 27-28, when we would be a $5 trillion economy, then we would become the third largest economy, right? We would become the third largest economy. So now you would ask me, अभी हम currently क्या है? Currently we are the 5th largest economy. Currently, on the basis of GDP, we are the 5th largest economy after your US, China, Japan and Germany, right? So अभी हम 5th largest है, and we are targeting to be the 3rd largest economy on the basis of GDP based on PPP, purchasing power parity. But this concept we will be doing later on, fine? So हमारा ये target है 5 trillion achieve करने का, ठीक है? And by the year 2047, which will be आजादी का महोत्सव, we will be achieving the figure of $30 trillion economy. So this is for the time being, fine? So अब एक GDP का आइडिया हो गया है. तो GDP इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर करता है, कैसे कंट्री ग्रो कर रही है, और हमें इंटरनेशनल कंपैरिजंस के जैसे हमने अभी बोला 3rd largest, 5th largest, तो ये कंपैरिजन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? GDP. If you don't have a figure like this, then how you would make the comparisons, right? So now proceeding to our topic for today, business cycle. So since I have made this dirty, I'll do it again. यहाँ पे हमने जीडीपी को रखा है, यहाँ पे टाइम को रखा है, ठीक है? तो जो बिजनेस साइकिल है हमारा, ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कि किस तरीके से
इकोनॉमी फ्लक्चुएट होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम डूइंग दिस, plotting this for you, and then we'll do a discussion on this, right? Okay, so this is the expansion stage, ठीक है, जब इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, एक्सपैंड करके we reach the peak, ठीक है। एक्सपेंशन पीक के बाद क्या होता है? रिसेशन। रिसेशन के बाद यहां डाउनटर्न में आपको क्या होगा? डिप्रेशन। ये जो पॉइंट है ये पीक है, और डिप्रेशन के बाद जो पॉइंट हम रीच करते हैं व्हेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ। उसके बाद इकोनॉमी की रिकवरी शुरू होती है, एंड देन यू अगेन हैव द एक्सपेंशन एंड देन द पीक, राइट। अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो एक्सपेंशन स्टेज होती है, व्हाट इज द एक्सपेंशन स्टेज? एक्सपेंशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब कुछ एट द हाईएस्ट लेवल है। इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एवरीथिंग इज एट द हाईएस्ट, बी इट योर इनकम, बी इट योर जॉब्स, ठीक है, बी इट योर वेजेस और सैलरीज, ठीक है, और डेटर्स आर पेइंग ऑन टाइम, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, राइट। तो एक्सपेंशन स्टेज वो होती है जब इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पर कर रही है एंड एवरीथिंग इज इन द बेस्ट ऑफ इट्स फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपेंशन के बाद जो पोजीशन हम रीच करते हैं उसको हम कहते हैं पीक। दिस कलर इज नॉट कमिंग सो वेल, राइट। तो एक्सपेंशन के बाद जो हम पोजीशन रीच करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पीक। अब पीक जो है दैट इज द सैचुरेशन पॉइंट, यू कैन कॉल इट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस एवरीथिंग इज एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? स्लोली ग्रेजुअली वी वुड सी अ फॉल, ठीक है, जिसको हमने रिसेशन बोला है। एंड माइंड इट, दिस रिसेशन इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन के पहले की स्टेज को हम रिसेशन कहते हैं, राइट। सो जब यहाँ पे सब कुछ पीक होने के बाद व्हेन द डिमांड, रिसेशन में डिमांड स्टार्ट्स टू फॉल, डिमांड फॉल करने लगती है, but suppliers they by the time they realize it, stock ज्यादा हो गया, that means supply is greater than demand. So when supply is greater than demand, what would happen? अब कुछ सोचो, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, so prices would fall, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकम लेवल, जॉब्स, वेजेस, सैलरीज, व्हाटएवर इट इज, इट स्टार्ट्स टू कम डाउन, राइट। उसके बाद उसके नीचे में ये जो स्टेज है, जो आपकी डिप्रेशन की स्टेज है, दिस इज व्हेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम्स नेगेटिव, ठीक है, सब कुछ फॉल हो गया है, ठीक है, एंड यू हैव रीच्ड दिस स्टेज जिसको हमने ट्रफ की तरह एड्रेस किया है, ठीक है। डिप्रेशन, यू मस्ट हैव सीन और यू हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन, राइट, the Great Depression of 1929-39, when ये एक फाइनेंशियल, जिसको हम फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। और देखो, जब भी डिप्रेशन होता है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ, देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट सबसे बड़ा रीजन है स्पेक्यूलेशन। आप स्पेक्यूलेट करके इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, you do undue investments without doing, proper study, and you end up and the market crashes, and the thing is in front of you, ठीक है। So depression का other भी reason था, the first one was the cause behind it, right? So not going into that. So depression just आपको थोड़ा idea लेना है that when the level of economic activity is in the downturn, is at the negative level, ठीक है। Like for example,
COVID was the reason, where we see, everything happening, like, economic activity and everything, incomes, job losses, everything we have seen, right? So ये stages economy में आते हैं, right? So, yeah. So after depression, what you would see is that, after depression, you would see a stage where slowly you would see recovery happening, right? Demand spurring up, demand increasing, right? And when demand would increase, suppliers would again start producing. Why? Because suppliers would only produce when there is demand. Without demand, they would not produce. So slowly, gradually, जैसे demand बढ़ रही है, तो suppliers have started producing. So recovery होगी, and gradually it would come back to its stage where you can see further economy expanding, right? So जो ये cycle है, जो economy जिसके through pass करती है, चाहे economy बोलो, चाहे कोई business बोलो, ठीक है, ये जो ups and downs है, इस पूरे cyclical structure को हम कहते हैं business cycle, right? जैसे for example जब हम आगे पढ़ेंगे कि business cycle से tackle कैसे करा जाता है, ठीक है? So over here monetary policy would come into play, the policy of the central bank, ठीक है? Now ये थोड़ा सा एक idea आपको मिल गया है, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, then what would be the factors responsible for this business cycles, ठीक है? सबसे पहला तो लग रहा है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये एक रीजन है, ठीक है? Then the other reasons are like your fiscal policy. Third reason could be external environment. Fourth can be technology, right? So ये कुछ reasons है, जिसकी वजह से you can see, these ups and downs coming for a business also and for an economy also at large, right? जैसे for example monetary policy के लिए कि as I said you, monetary policy which is the policy of the central bank, जब recession होगा then the bank would use a expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy मतलब pumping money inside, pump money करना market के अंदर, and on the other hand when it is expansion stage, that time they would follow a contractionary monetary policy की वो market से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है? So this is all about it कि business cycle why it is important और उसकी study हमारे लिए क्यों crucial है to study the further concepts. Thank you.